Hope you are studying well at your home. Now we will start our next topic, that is artificial hybridization. Today we will discuss about artificial hybridization. Now what is the meaning of this process? What is artificial hybridization? Artificial hybridization is the process of enhancing or improving the characteristics of a plant. अगर आप एक प्लांट के कैरेक्टर्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, सपोज आपके पास एक प्लांट है पर आपको लगता है कि उसकी जो कैरेक्टर्स हैं वो पर्टिकुलर वो सुटेबल नहीं है, यू वांट टू इंक्रीज द कैरेक्टर्स, देन यू कैन मिक्स द कैरेक्टर्स ऑफ अनदर प्लांट व्हिच हैव इंप्रूव्ड कैरेक्टर विद दैट योर प्लांट. Then this process is known as artificial hybridization. So this is the technique by which we can improve the characters of the plants by artificial means. By this process can be done by human being. That's why it is known as artificial hybridization. This is the best technique in the plant breeding program. So it's a process which is used in plant breeding programs. Plant breeding program वही जिनके अंदर plants के characters को improve किया जाता है. तो इस प्रोसेस में यूज होने वाली, इस टेक्निक्स में यूज होने वाली, इस प्रोसेस प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स में यूज होने वाली जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ दिस प्रोसेस, कैसे कैसे हम ये करेंगे इसके बारे में बात करते हैं. द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लांट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज द वेरी फर्स्ट स्टेप बाय व्हिच वी कैन स्टार्ट द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज सिलेक्शन ऑफ प्लांट. सिलेक्शन ऑफ प्लांट फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि आपको अगर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना है, आपको प्लांट के कैरेक्टर्स को इंक्रीज करना है, तो सबसे पहले आपको प्लांट्स का सिलेक्शन करना होगा. यू नीड द प्लांट्स इन विच यू वांट टू इंप्रूव द कैरेक्टर्स एंड यू नीड अ वन प्लांट बाय विच यू वांट टू टेक द कैरेक्टर्स. मींस आपको यहाँ पे दो प्लांट्स चाहिए. एक प्लांट वो होगा जिसके कैरेक्टर आप इंप्रूव करना चाहते हैं और दूसरा प्लांट वो होगा जिसमें से आप रिक्वायर्ड कैरेक्टर को उस प्लांट के अंदर मिक्स करना चाहते हैं. सो हियर वी वॉच टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स. हियर द फर्स्ट प्लांट जो हम एक प्लांट लेंगे दैट वुड बी द फीमेल प्लांट. सपोज वी हैव टेकन अ वन प्लांट. अगर हमने एक वन प्लांट लिया है, वो प्लांट उसके जो फ्लावर्स हैं, द फ्लावर्स आर जस्ट फॉर्मिंग द female part, or suppose it's a bisexual flower. Suppose we have taken one plant in which the flowers are bisexual. अगर bisexual flower होगा तो हम उसके क्या करते हैं, we will remove the stamen. हम उसके stamens को remove कर देते हैं. Stamens are removed and only female part is kept. तो first plant जो हमारे पास होगा उसमें से हम सिर्फ उसका फीमेल पार्ट सिलेक्ट करेंगे. वी विल टेक जस्ट द फीमेल पार्ट ऑफ द वन प्लांट एंड रिमूव द स्टेमन, और उसके स्टेमन्स को रिमूव कर देंगे. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग स्टेमन इज नॉन एज इमैस्कुलेशन. इमैस्कुलेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इमैस्कुलेशन. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग of stamens from the flower before they get mature and that dehiscence to release the pollen grain. अगर उससे पहले आपने pollen stamens को remove कर दिया, then it is known as emasculation. So first of all we will do the emasculation. हम emasculation करेंगे and we will take only the female part. हम सिर्फ female part अपने पास रखेंगे. This condition is done when the flower is bisexual. कब करेंगे? जब flower bisexual होगा. Suppose flower is unisexual and it is just forming the one part, that is the female reproductive part. अगर flower सिर्फ female reproductive part form कर रहा है, then this emasculation process is not required. उस टाइम पे हमें करने की जरूरत ही नहीं है, because stamen is already absent there. It's just a female part, only pistils are there. Flower is pistillate flower. Then emasculation is not required. Now let's see how the emasculation is done. कैसे स्टेमन्स को रिमूव किया जाता है. स्टेमन जैसे कि आपको पता है, लाइक दिस इज द थैलेमस पार्ट. यहाँ पे इस तरीके से फिलामेंट के साथ स्टेमन्स अटैच रहते हैं. दिस लोब लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट हियर. दिस इज द एंथर एंड दिस पार्ट इज द फिलामेंट. इफ द स्टेमन्स आर वेरी बिग इन साइज, अगर स्टेमन का साइज बहुत बड़ा होता है, देन वी कैन इजिली कट एंड वी कैन रिमूव द स्टेमन्स. तब हम सिर्फ इनको कट करेंगे एंड वी कैन रिमूव द स्टेमन्स. Otherwise, if the stamens are very small in size and they are very close to the pistil, pistil के साथ बहुत टच में है, साइज में बहुत छोटे हैं, हम उन्हें कट करके सेपरेट नहीं कर सकते, then we can use some special type of suction pumps. तो आप suction pumps यूज करेंगे. By suction pump you can suck the stamens and we can remove the stamens. So first step,
that is selection of plants, in which we use the plants. 2 plants are selected, and in 2 plants we will take a first plant we will take, in which we will remove the stamens and we kept only the female part. हमें हमारे पास क्या रहेगा, will kept only the female part. तो female part हम अपने पास रखेंगे उस flower का, and will remove the stamen parts. अब हम यहाँ पे प्लांट का सिलेक्शन जो कर रहे हैं वो किस बेसिस पे करेंगे, इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. सपोज वी वांट if we take the example of suppose sugarcane. If we want a sugarcane in which both characters like stem size is also large and sugar content is also high. Suppose I have one sugarcane variety in which the size of stem is large but sugar content is very low. मान लीजिए मेरे पास एक शुगरकेन की वैरायटी है जिसमें स्टेम का साइज तो बहुत बड़ा है बट शुगर कंटेंट जो है वो बहुत कम है, एंड सम अनदर वैरायटी ऑफ शुगरकेन हैव शॉर्ट स्टेम्स एंड हाई शुगर कंटेंट. So if we mix the characters, the same characters of these another sugarcane with the our sugarcane variety, then we can get an improved variety of sugarcane in which we can get large size of stems with high sugar contents. This is the process of reason of making this process or doing this process, artificial hybridization. So here we select the plant. First plant that we selected, we remove the male part, we remove the stem, and we just kept the female part in the flower. Second, now what will we do it? After doing the emasculation, we do the next step, that is bagging. We do the bagging. हम करेंगे bagging. Means आपने क्या किया है, आपने इसके यहाँ पे pistil है, हमारी pistil present है, that is the pistil part of the flower. You remove the stamens. हमने stamens को cut करके remove कर दिया है. Now after emasculation we close this pistil with a bag. हम इसे एक bag के साथ close कर देंगे. We cover it with a bag, and that bag could be a but made up of butter paper or anything. तो हम यहाँ पे इसको cover करके रखेंगे so that the unwanted pollen grains do not able to reach to this stigma. इस स्टिग्मा तक कोई भी अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स खुद ना पहुंच पाए, कोई भी कंटामिनेटेड पॉलन ग्रेन्स या अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स ना पहुंचे, इसके लिए हम करेंगे बैगिंग. So second step is bagging, in which we cover the female part of the emasculated flower. Emasculated flower का female part को हम cover कर देंगे. After that we do the third step, that is the collection of pollen grains. Next step is collection of pollen grains. Now we will collect the pollen grains of the desired plant. Here the first plant which we choose, we take the female part of that flower, and the next second plant by which we want the male part, the stamen, we selected, from where we collect the pollen grains. Again this can be done by bagging. वहां पे भी हम क्या करेंगे, हमारे दूसरे प्लांट के जिसके हमें pollen grains चाहिए, अब वहां पे भी उसको बैग से कवर करके रख सकते हैं, so that when the anther get mature and the dehiscence, the pollen grains get released, these pollen grains are collected in a bag. वो इधर उधर डिस्पर्स ना हो जाए, सारे pollen grains आपके बैग में ही रहे. तो इस तरीके से हमारे pollen grains कलेक्ट हो जाएंगे, and then we use these pollen grains and we dust these pollen grains on our emasculated flower. So we take the collected pollen grains, हमें collected pollen grains लेंगे और इन collected pollen grains को फिर हम dusting करेंगे. Means spreading these pollen grains on these pistil, on this stigma is known as dusting. हम इसकी dusting करेंगे when the stigma become receptible. जब ये mature हो जाएगी and it's able to receive the pollen grains, at that time we do the dusting of selected pollen grains. So next step is dusting. After dusting we will cover it again. हम इसको फिर से cover करके रख देंगे. And after covering, we will wait for the fertilization. Next step that will happen here is the fertilization. उसके बाद क्या होगा, fertilization होगा, and fertilization के बाद formation of seed will form. This is the natural process. This is not done by us. We just close or cover this pistil part or do the bagging again after dusting the desired pollen grain. Pollen grain आपने dust कर देने हैं, उसके बाद आप फिर से इसे cover कर देंगे और उसके बाद अपने आप naturally fertilization होगा. Fertilization के बाद seed formation होगा, and then we will test these seeds. We will do the testing of these seeds. How we will do the testing? Testing is done means we just grow these seeds. हम इन seeds को grow करेंगे soil के अंदर, and when the plant will grow up, the plant form हो जाएगा, then we check the contents, then we see that
is the sugar cane. Now we'll take the example of sugar cane. तो हम sugar cane की ही बात कर रहे हैं कि जो sugar cane के characters हम mix करना चाह रहे थे, the long stem or high sugar content is both of these two characters are present in these type of seeds which we formed by this artificial hybridization or by this hybridization method. If it is done, then we can say that we mix the characters of two different plants in a one plant. That is known as artificial hybridization. So it's very important process in the plant breeding programs by which we can improve the characters of plant varieties by mixing the characters of two different plants in a one plant. So here we discuss the plant hybridization. We will discuss about the emasculation. Emasculation is very important process. You have to keep remember. Then we did bagging. After that, we dusted the collected pollen grains on the emasculated stigma. And then after fertilization, we get the desired seeds. So this is about artificial hybridization. With this topic, we completed our this second chapter of the first unit, that is reproduction in flowering plant. And now we will start our next chapter, that is reproduction in human being. So keep watching, keep studying, and keep learning. Thank you.